रेलिवेंट पेज कौन सा ऑफिसर? सर सॉरी मेरी किताब जरा मुझे नहीं मिल रही, लेकिन 73 सुप्रीम कोर्ट पेज 49 में इज अ ब्रेक डिले बट जस्ट पढ़ लेंगे बाद में, अगर आपको नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. माय लॉर्ड, एंड द रेलेवेंट पोर्शन माय लॉर्ड विल फाइंड एट page 69, sir. It starts, it refers to 68, the case of Fazl Qadir Chaudhary, sir. First paragraph. Para 69, sir. And it says this, the whole page. Para 69? The page 69, my lord. जी. जी. कहाँ से पढ़ें? जी. कौन सा पैराग्राफ? जी, para D, जहाँ parenthesis D, paragraph से, what the Honorable Supreme Court was saying. So far, therefore, as this court is concerned, it has never claimed to be above the Constitution, nor to have the right to strike down any provision of the Constitution. It has accepted the position that it is a creature of the Constitution, that it derives its power and jurisdiction from the Constitution, and that it will even confine itself within the limits set by the Constitution, which it has taken oath to protect and preserve. But it does not claim that, and has always claimed that it has the right to interpret the Constitution and to say to what a particular provision of the Constitution means or does not mean, even if that particular provision is a provision seeking to oust the jurisdiction of this court. This is the right which is acquired, not dehost the Constitution by virtue of the fact that it is a superior court set up by the Constitution itself. It is not necessary for this purpose to invoke any divine or supernatural right, but this judicial power is inherent in the court itself. It flows from the fact that it is a constitutional court and can only be taken away by abolishing the court itself. In saying, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system where there is trichotomy of sovereign powers, then ex necessity derive from the very nature of things, the judicial power must be vested in the judiciary. But what is this judicial power? Judicial power has been defined in corpus juris secundum. The judiciary or judicial department is an independent and equal coordinate branch of government, and is that branch thereof which is intended to interpret, apply the law, or the department of government which is charged with the declaration of what the law is and its construction so far as it is written law. This power, it is said, is inherent in the judiciary by reason of the system of division of powers itself, under which, as Chief Justice Marshall put it, the legislature makes the executive execute and judiciary construes the law. Thus, the determination of what the existing law is in relation to something already done or happened is the function of judiciary, while the predetermination law shall be for the regulation of all future cases falling under its provision is the function of legislature. It may well be then asked at this stage as to what is meant by jurisdiction. How does it differ from judicial power? Apart from setting up the organs of the Constitution, may well provide for a great many things, such as the subjects in respect of which that power may be exercised and the manner of the exercise of that power. Thus, it may provide that the courts set up will exercise revisional or appellate powers, or only act as a court of secession, or only constitutional issues. It may demarcate the territories in which a particular court shall function, over which its writs shall run. It may specify the person in respect of whom the judicial power to hear and determine will be exercisable. These are all the matters which are commonly comprised in what is called the jurisdiction of the court. It expresses the concept of the particular rest or subject matter over which the judicial power is to be exercised and the manner of its exercise. Jurisdiction is therefore right adjudicate concerning a particular subject matter in a given case, as also the authority to exercise in a particular manner the judicial power vested in the court. In exercising this power, judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of the public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested it with the power to declare law is in the cases which come before it. It thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is a duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. This is no doubt a delicate task, as pointed out in the case of Fazl Qadir Chaudhary versus Shah Nawaz, which has to be performed with great circumspection. It has nevertheless to be performed as sacred constitutional duty when other state functionaries disregard the limitation imposed upon them or claim to exercise power which the people have been careful to withhold from them, sir. So this is the difference between jurisdiction and judicial power. The power exercised under 191 is a constitutional power vesting in this court to regulate the practice and procedure of the court, and Parliament cannot interfere in that because that's exclusively given. If it was
have said until the parliament makes the law, the Supreme Court can make the rules of procedure, etc. These kind of words were not used. Where the Constitution specifically uses these words, then the law is being given. But it says subject to, that is implying there's not an enabling provision, it's a restrictive provision. This is my humble submission. As my Lord, anything else? Mr. Zubairi, the similar principle was reiterated in Sharaf Afridi's case. That was regarding independence of judiciary, and that was separation of judiciary, PLD 94, Supreme Court, page 105. Added note by Salim Akhtar. Ji, sir. Ji. And it was coming from a larger bench of the Sindh High Court, 89 Karachi, page 404. That judgment was upheld, authored by my Lord Ajmal Miazi then was, sir. My Lord. I think if you argue in context of Pakistan and what's happening and why presumably the legislator enacted this. I understand, sir. No, you're not. Now let me pose a certain queries to you. This, they are giving a right of appeal. Now we're talking about the right of appeal under 184(3). My Lord. Correct? Yes, my Lord. अब 184(3) में जो हक दिया गया है अपील का, आपने बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि 184 कैसे इस्तेमाल किया गया है. ठीक सर. ठीक है, या तो कहिए बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है, या कहिए बिल्कुल गलत हो रहा है, या कहिए कभी सही हो रहा है कभी गलत. कुछ तो बयान कीजिए ना, क्योंकि आप तुम्हारे सामने पिटिशन नहीं लाए. मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी एंग्जाइटी क्या है इस लॉ से. वजाहत से बात कर दें तो हम समझ जाएंगे. अब सवाल अभी तक आया नहीं है. 184(3) जो है ना का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में, हकीकत क्या है. ह्यूमन राइट्स सेल, कोई रूल में उसका तस्करा है बताइए, है किसी कानून में तस्करा है बताइए, है. अभी तो हम चलें पार्लियामान को तो छोड़ दें, हमारे अपने रूल्स में उसका तस्करा है. अब 184(3) जहां तक हेबस कॉर्पस की बात है उसका तो रूल में तस्करा है, मगर जो दूसरे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं 184(3) के तहत उनका रूलों में तस्करा था नहीं था, कैसे इस्तेमाल किया गया. और अगर आप कहते हैं कि रूल की भी ज़रूरत नहीं उधर, अब तो हम रूल से भी चले गए ना. 191 ये तो नहीं देता है इजाज़त के चीज़ बना सकता है रूल, या ह्यूमन राइट्स सेल बना सकता है, या तो क्या ये है. तो वहाँ तो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं. उसमें चलें, यहाँ तक बात मान लेते हैं कि अगर 184(3) में ह्यूमन राइट सेल बन गई होती, फिर आपकी बात में वजन होता कि भाई ठीक है 184(3) में ह्यूमन राइट सेल बन गई है तो उसके तहत कर लिया है, सही किया गलत किया तो बात की बात है. तो वो बातों को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहते हैं कि 184(3) में. अब देखिए, इससे पहले कि दुनिया हम उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूँ कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है, और हज़ारों केसेस में कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस. ठीक है, पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल्स के तहत कर रहे थे. अब आप कह रहे हैं चलें खैर सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए. तो कम से कम वहाँ ज़्यादा वजन नहीं होगा कि वो तो कम से कम कानून के मुताबिक एक चीज़ करना चाह रहे हैं. यहाँ ये 184(3) का इख्तियार कैसे इस्तेमाल हुआ भाई, ये हकीकत है पाकिस्तान की. आप न्यू जर्सी ना जाइए, आप पाकिस्तान में रहिए और यहीं की बातें थोड़ी हम लोग कर लें. कैसे इख्तियार हुआ बता दें, ये आप बिल्कुल तरीक़ेकार सही, फिर बात सही है. अगर आप कहते हैं नहीं था तो फिर आप उसकी रेमेडी, अगर एक गलती होगी फिर उसकी रेमेडी तलाश करना किसकी जिम्मेदारी है. सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस अदालत की है, इसके बाद शायद पार्लियामेंट की पड़ती है. अगर हमने गलती की हमें दुरुस्त करना चाहिए, अगर पार्लियामेंट ने गलती की है तो पार्लियामेंट को दुरुस्त करना चाहिए. अगर हम अपनी गलती नहीं दुरुस्त करते हैं तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है. नहीं, आप बस सिर्फ उस बात पे खड़े हुए हैं, मगर जितनी वो जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसको वो नज़रअंदाज करें. चाहे वो प्राइस शुगर का तयन कर ले या कोई और बातों का कर ले, भाई वहाँ तो रूल्स बना लेते. एक ऑर्डर था मेरा कि भाई चलें रूल्स बना ले, फिर इसको हम कर लेते हैं. तो वहाँ तो आप जा ही नहीं रहे हैं. तो आपका जो कंडक्ट आ जाता है क्वेश्चन में कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं. नो सर, आप किसको कर रहे हैं? नोटिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं. अच्छा, तो आप वजाहत देखिए कि आप किसके लिए. चलो खैर ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट का हमें बताएं ना मौक़िफ़ क्या. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है कि 184(3) जैसे इस्तेमाल हो रहा था सही हो रहा था, तो फिर बता दीजिए ना. अगर हम इस कानून को
ختم کر دیتے ہیں، قلم کر دیتے ہیں، تو کل میں اس کا استعمال ویسے ہی کرتا رہا ہوں جیسے پہلے ہو رہا تھا، وہ صحیح ہوگا؟ اس کا جواب دے دیجیے گا. سب بالکل میں آپ سے متفق ہوں اس بات میں نے کوئی یہ پوائنٹ آف ویو نہیں دیا، میں آپ کا سمجھنا چاہ رہا ہوں. میرے نہ کہیے کہ میرا موقف ہے یہ. سر آپ کا موقف تو ہم سن چکے ہیں کہ آپ نے نہیں، میرا موقف نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جی آپ اپنے پاورز گیو اپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا. نہیں، یہ وہ الگ بات ہے. یہ ابھی بات ہو رہی ہے 184(3) کی، پروسیجر والی بات الگ ہے، وہاں پاور کی بات. پہلے میں پوچھا بھی تو یہاں 184 پہ تو آیا ہی نہیں تھا. میں آپ 175 کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ آ رہا تو میں تو پھر آپ سوال ہو گئے تو مجھے آنے تو دیں 184 پہ. اس پہ کب آئیں گے؟ 10:30 بج گئے سر. آپ 11:30 تک اس سے پہلے میں انشاءاللہ ختم کر لوں گا. لیکن آپ کو نہیں 11:30 کہا تھا، سب کو کہا تھا. اچھا سر، میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ 184(3) پہ تو بھی آیا نہیں تھا، لیکن بالکل آپ سے متفق ہوں اس بات سے کہ 184(3) کا غلط استعمال بھی ہوا ہے. اس پہ بہت چیزیں جس پہ بہت سوالات اٹھے، لیکن پوائنٹ از دیٹ بات میں جو آرگیو کر رہا ہوں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کہ آپ ایک فلسفائی بات کر رہے ہیں. نہیں سر، حقیقت میں وہ نہیں ہے. آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ صحیح استعمال ہوا غلط، میں اس کا جواب نہیں تو پھر اس کا حل بھی بتا دیں. حل آ رہا ہوں سر، پہلے بات بتا رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا اس پہ حل کی طرف آ رہا ہوں. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ سر اس کا صحیح استعمال ہوا غلط استعمال ہوا، دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ کمپیٹنس کس کی ہے اس کو صحیح کرنے کی، جورسڈکشن کس کی ہے. نہیں آپ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اب اپنی ذمہ داری ایک دم ہم پہ ڈال دی. نہیں میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں تو آپ نے کہا دیکھنا آپ کو ہے، آپ کی کوئی رائے ہے، آپ پاکستان کی سب سے بڑی باڈی ہیں وکیلوں کی، تو بتائیے نا، اپنی رائے بتائیے. جی عابد زبیری صاحب. جی سر. اسی ٹیکسٹ میں اگر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے ایگزسٹنگ اس کے تحت سے 184(3) کو لیں، اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، اٹ ہیز دی ایفیکٹ آف وائلیٹنگ دا فنڈامنٹل رائٹس، کیا پارلیمنٹ جس کے پاس ویسے اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جورسڈکشن کو انلارج بھی کر سکتے ہیں اور سپلیمنٹل پاورز بھی کنفر کر سکتے ہیں، کیا وہ فنڈامنٹل رائٹس کے کانٹیکسٹ میں، ایکسیس ٹو جسٹس کے کانٹیکسٹ میں، از اٹ بیریفٹ آف جورسڈکشن؟ اگر سپریم کورٹ اپنے رولز کے تحت اس کا ایفیکٹ یہ ہو کہ فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، ایکسیس ٹو جسٹس بالکل صحیح سر. پریکٹس میں 184(3) کی بات نہیں کر رہا، آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر. You had, I think, come on track. جی. And I had said this in the first hearing. It is not a question of good, bad, It is not competence, sir. It is the question of competence. Competence. Who is there to correct it, or who has to be here to make the law? A law may be a very good law, Yes. but if somebody who is not competent to make it, جی. it is in conflict with the constitutional powers, جدھر trichotomy of powers ہیں. آپ ہمیں یہ کمپٹنس پہ بتائیے کہ یہ کس کی کمپٹنس. وہ تو بات ہم سمجھ گئے، آپ کا موقف یہ ہے، وہ تو بات سمجھ گئے، مگر میرا سوال اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو نظر انداز کر لیں صرف کمپٹنس پہ. تو وہ آپ بتا دیجئے، اس پہ تو آپ ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی رائے. اپیل کے اوپر آ رہا ہوں، لیکن پہلے میں جج صاحب کا سوال دے دوں. اطہر من اللہ صاحب نے جو پوچھا، مائی لارڈ، مائی آنسر از دیٹ اٹس ناٹ اے میٹر آف گڈ اور بیڈ اور غلطی، اٹ از اے میٹر آف کمپٹنس. My Lord has to see, this court has to see whether they had the competence to even correct that thing by making this law. Then you have not crossed the first hurdle. There's a presumption of constitutionality. جی. آپ نے ایک لا چیلنج کیا ہے، جی. اس کی ریپٹل کے لیے آپ نے نہ اسٹینڈنگ بتایا ہے، نہ 184(3) کے تحت سر میں ابھی تک یہ بتا سکتے ہیں آپ کون سا فنڈامنٹل رائٹ انفورس کر رہے ہیں. آپ اس مینٹینیبلٹی کو بھی نہیں کراس سر. میں ہم ایک ایبسٹریکٹ میں جی وی آر سر 191 کے پہلے دیکھیں، آپ سے میں نے سمپل ایک سوال یہ jurisdiction of this court is not just آپ سے سمپل میں نے ایک سوال پوچھا ہے. جی. ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ ڈینائی ہو رہا ہو، یہ سپریم کورٹ ڈینائی کر رہی ہو، جی. فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ کر رہی ہو. کین دا پارلیمنٹ ناٹ legislate? My humble submission, no, they cannot. If the court is violating any of the rules of the constitution, then the case should be brought before the honorable before the Supreme Court to challenge that thing. That is the way to challenge the law. Any rule made by the Supreme Court, Parliament cannot make. آپ میرے سوال کا بھی تھوڑا جواب دیں. مجھے یہ بتائیے عابد صاحب جی، the Chief Justice exercised his powers under before law by fixing these petitions. Why not more important petitions like enforced disappearances, other human rights issues?
Now, that is a question which the Parliament wanted to address. Why should these cases have been taken first? Why not other most important cases? My humble submission is practice and procedure, only the power to regulate the practice and procedure rule making vest in the court. It does not vest in the parliament to make the practice and procedure, even if there was something. ये बात आप कर चुके हैं, नई बात कर देना, सवाल जवाब देना. And the law can be challenged on two grounds: that violates fundamental rights or is in violation of some constitutional provision. That is the jurisdiction of this honorable court, not just the violation of the fundamental right, but if the law itself is in violation of some constitutional provision, that can be struck down by this court. So that is the jurisdiction of this court. अब आप बताएंगे मेरे सवाल, अब आप आबिद साहब, मेरे बात की High Court has also jurisdiction on 199. तो मैं लिखूं, मैं अपना लिख देता हूं. It was put to him and he is not answering Sir, it. I'm coming, but my lords, आप पहले वन बाय वन कर दीजिए. अच्छा, बहुत बेहतर सर जी. अच्छा, 184(3) पढ़ें सर पहले प्लीज. नहीं, मुझे मैंने जो बात की वो पढ़ तो 100 दफा लिया है. मैंने जो आपको बातें बताई उसका जवाब, आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जी अपील का हमारी स्टैंड भी का राइट होना चाहिए, बट इट हैज टू बी गिवन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल. ये बात नहीं की थी मैंने, कहा जितना इस्तेमाल हुआ सब सही हुआ. मैंने जवाब भी आपने कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मैं कहता हूँ नहीं, अगर नहीं भी हुआ है सही, अगर पूछ रहा हूँ, आपकी कोई राय नहीं है. मैं कहता हूँ सही भी हुआ है, गलत भी हुआ है, नहीं भी अपील होनी चाहिए. मैं कहता हूँ आप ये मैं पूछ रहा हूँ आपकी राय में, इन योर पर्सनल ओपिनियन, अगर मगर ना करें, सीधी बात करें ना, आपके यहाँ हुआ है, सारे सही हुआ. मैं कह रहा हूँ कि दोनों अच्छा भी हुआ है, गलत भी हुआ है. जी मेरा ये, और ये मैं आपसे आपके सवाल का जवाब. ठीक है. अच्छा, अब आप दूसरा सवाल सुन लीजिए. आपका ये कहना है कि तरीके कार गलत है, यही आपका आर्ग्यूमेंट है ना? ये राइट देना चाहिए मगर आइन को तरमीम लाने की, ये आपका बिग मौकिफ है जी. अच्छा, अब सुनिए, क्योंकि जुरिस्डिक्शन ना हम बढ़ा सकते हैं और ना पार्लियामान बढ़ा सकती है. हम ये केस सुन कैसे रहे हैं फिर जी? हम 184(3) में सुन रहे हैं ना एक केस जी. हमने जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी या क्या ये नहीं बढ़ाई? क्योंकि जुरिस्डिक्शन कर्टेल्ड है 184(3) में. दो बातें, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. अब कौन सी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कर रहे हैं? आप कह रहे हैं यहाँ बढ़ा दीजिए मगर वहां ना बढ़ाइए, तो यहाँ ये हम केस सुनने से ही अपनी जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे हैं. सर आपने, ये आपका मौक़िफ़ होगा? आपकी सारी जजमेंट्स जो है मैं आपसे अब सवाल पूछ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं. जजमेंट्स का ना सवाल है. 184(3) के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी सुप्रीम कोर्ट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और अगर कोई कानून मुकन्ना बनाती है तो उसके ऊपर डिक्लेयर करना कि वो कानून आइन के मुतसादिम है, वो भी आपका हक है अंडर 184(3). अच्छा, जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में जब भी कोई अमेंडमेंट आ जाए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत हो सकता है. आपका कहना ये बिल्कुल हो सकता है. इफ माय लॉर्ड, ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया. बिल्कुल करें सर. इवन इफ इट्स नो फंडामेंटल राइट इज इन्वॉल्व्ड. नहीं, फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, लेकिन टैक्सेशन मैटर में वन फंडामेंटल राइट होती है. कोई अमेंडमेंट भी चैलेंज हो सकती है, वहां भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू आता है सर. व्हाट इज द मैटर? देखिए, दो कंडीशंस होती है ना सर, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स. इट्स नॉट आइदर और, इट इज बोथ साइमल्टेनियसली. वही मैं कह रहा हूं कि आप दोनों चीजों को देखना होगा, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को नहीं देखना होगा आपको. तो ये केस में क्या फंडामेंटल राइट है बताइए ना हमें. इसमें फंडामेंटल to justice का my lord was saying कि कौन सा आर्टिकल बता दें, वो वाला आर्टिकल. आर्टिकल राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ में होल्ड किया गया है कि जी, होल्ड नहीं किया गया, उसके लफ्ज में बता दें कौन से में आता है तो मैं लिख लूं जी. एक्सेस टू जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज बीन हेल्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द वर्ड्स ऑफ आर्टिकल 9. से तो आप कह रहे हैं लिटरल रीडिंग में तो नहीं है, इंटरप्रिटेशन. अच्छा, लिटरल में नहीं है ना, तो ये तस्लीम आप करते हैं. लिटरल में नहीं है, इंप्लाइड रीडिंग में है. नहीं, जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल व्हिच इज बाइंडिंग it says कि जी access to justice since high court binding, it may be binding on you, not on us. Sir, since high court bar का जो फैसला है 2009 सुप्रीम कोर्ट 879, which is a full court फैसला, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आर्टिकल 9 की वायलेशन में access to justice independence. चलिए ठीक है, मेरा सवाल का जवाब मिल गया मुझे. आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़े. हाँ, जुबैरी साहब ये बता दें कि आप करें एक्सेस टू जस्टिस की बात है, सिटीजन एट लार्ज की बात है, इस एक्ट के तहत वो कौन सी कोई ऐसी प्रोविजन में है जो पब्लिक को डिबार करती है टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट? ऐसे कोई प्रोविजन जो कह सके कि इसमें जो बात है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वी हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. दिस लॉ, इसमें अच्छा लॉ होगा, बहुत अच्छा लॉ होगा, लेकिन इशू ये है कि इट इज द कॉम्पिटेंस. अगर कॉम्पिटेंस नहीं थी देन इट्स नॉट अ राइट लॉ, इट इज अल्ट्रा वायरस. मेंटेनेबिलिटी की बात कर रहा हूं. इस एक्ट को देखने के लिए हमने ये देखना है कि आया इसकी प्रोविजन या टोटल एक्ट किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है
या इसके जरिए कोई पब्लिक या किसी सिटीजन का हक मारा जा रहा है कि उसे पहले तो अपील की हक थी अब नहीं दिया जा रहा है, पहले ट्रायल की हक थी अब नहीं दिया जा रहा है, ऐसी कोई प्रोविजन इसमें है कि हम कह सके कि ये इलीगल? सर मैं कह रहा हूँ इसकी प्रोविजन आपको ये देखनी है कि क्या ये कानून साजी हो सकती है। जवाब दें उसके बाद पहले। मैं आ रहा हूँ सर, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये देखना होगा कि क्या कानून साजी का इख्तियार था पास टू मेक दिस लॉ। चलिए इसमें बता दो, आपने पहले कहा कि 1980 में रूल्स बने जी, वो रूल एग्जिस्टिंग लॉ के तहत बने जी, ये तो आप मानते हैं कि रूल लॉ के तहत बनने चाहिए जी, तो क्या आप रूल बने 191 के तहत सर, 191 आर्टिकल रूल लॉ के तहत। आपने थोड़ी देर पहले जो आर्गुमेंट से आपने कहा कि एग्जिस्टिंग लॉज के मुताबिक 1980 में रूल जी बिल्कुल एग्जिस्टिंग लॉ। प्लीज मुझे बता दें, मेरी नजर से तो नहीं गुजरे, 1980 में उस वक्त कोई ऐसा कानून था जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस को नहीं फॉलो कर रहा था? बिल्कुल नहीं तो था। ये रूल कैसे बने? अंडर 191 56 के बने, पहले बने 1956 में। लॉ कहाँ गया सर? लॉ अगर कोई लॉ है, वर्ड यूज सब्जेक्ट टू लॉ। सब्जेक्ट टू लॉ मींस कि कोई लॉ अगर होता, कोई भी लॉ हो, इट कैन बी एनी लॉ, सब्सटेंटिव लॉ। आई थिंक वो 191 वाला आर्ग्यू आप कर चुके थे, अब आप 175 पे थे। कोई था जिसके वायलेशन में नहीं बन सकते थे, ये मेरे हम्बल सबमिशन थी। ठीक ठीक ठीक, ये लॉ प्रोसीजर। अगला पॉइंट बताएं। अगर कोई होता, if I may ask you a question. The equivalent to Article 184(3) of our Constitution, I think, is Article 32 of the Indian Constitution, जी मालूम, which guarantees the right to move the Supreme Court for violation of fundamental rights. If memory serves me right, Mr. Ambedkar, who is regarded as the father of the Indian Constitution, in relation to this jurisdiction conferred on the Supreme Court, said it is the very soul of the Constitution. जी। Now, if that is correct, and in India no one has ever doubted that that is correct, we are here talking of the very soul of the Constitution. Yes. And It seems to me that, and this is my question to you, that can a challenge to a law which, according to you, whether right or wrong, that's yet to be decided, that is an assault on the independence of the judiciary, is that not an assault on the very soul of the Constitution? Of course, because Can it be therefore put to one side simply by saying that it is not in violation of fundamental rights? no, because This my is humble the- submission is that this is what my humble submission is, that the very purpose this law, and I read that judgments, that it affects the separation of doctrine of separation of powers. My lord, this court has the exclusive jurisdiction. चलिए ये point आप repeat करते रह रहे हैं, अगला point and that's बताइए। why if any law which is made in violation of that cannot be, that affects the even the fundamental rights of the people of Pakistan and access to justice. Next point पे आते हैं। Sir, 184 की जो power, that's the original power of this court. There's appellate power is 185, sir. Advisory power is 186. Review power is 188. These are the four powers which are given by the Constitution. No, you are wrong. The other parts also. I'm talking about these are the appellate men की बात कर रहा हूँ, चार powers की जो दी हुई है. Now, the original framing में appeal का right नहीं था. Appeal is only provided under Article 185. Now, if you want to give an appeal, my humble submission is that you have to amend the Constitution. And why? Because section आप पढ़ेंगे sir, Article 175, 142 देखा, अब entry 55 देख लें sir. What does entry 55? पढ़ें। जी. My lord, 175(2), Article 142A and entry 55 have to be read together, not in. पढ़ने 55 से कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? Jurisdiction powers all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters list and to such. Now, I'm coming to emphasize this last part, sir. The second part of this entry, and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. Now, these are very important words, and my lord, I'll keep that my lord's thing. And by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction Supreme Court and conferring thereon of supplemental powers, sir. The point is that the thing, पिछले जो आपके जो लिस्ट थी, उसके अंदर ये words नहीं थे. In the 56 Constitution, 62 and 72, expressly authorized by. पढ़ लिए, अब आप argument develop करें. Argument is that कि जी, when you read all these provisions together, no court shall have jurisdiction except provided by Constitution or law. The 142 जो Parliament can make laws in regard for. यहाँ इंक्रीज की जो बात हो रही है, उस पे मैं सिर्फ एक पैराग्राफ जजमेंट. इसके पावर इंक्रीज हो रहे हैं ऑन द सुप्रीम कोर्ट की पावर. यहाँ आप इसमें आप कह रहे हैं ये इंडिपेंडेंस जुडिशरी खत्म हो रही है क्योंकि पावर इंक्रीज हो रहे हैं. सर, इट इज द मेथड, द मेथडोलॉजी. फिर वो मेथड वाला आर्गुमेंट खत्म हो गया. नहीं सर, इसमें यही है अब आप दूसरा
आपकी original jurisdiction के अंदर appeal नहीं provided थी on the original framers of the constitution. They did not provide. Only the appeal was. मगर मैं फिर उसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी दे सकता हूँ कि 184(3) का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया नहीं, देखिए ये आप सॉरी टू से इफ समबडी albeit a person not even fully authorized is doing something to help the nation, help the Supreme Court, you should say strike down because they're not following some perceived letter of the Constitution. That will be a stretch. If this power had been given to the Federal Shariat Court, if it had been given to some secretary in the government or to the parliament even, then you could say yes. We एक appeal दे दी, in a fit of rage, a judge says, so and so political party, I hereby ban it. खत्म, कोई solution नहीं है इसका, except review, right? You know, in a fit of rage, या आपकी बात किसी को पसंद नहीं आई या कुछ मिसगी हो गई, हो जाते हैं, इंसान दोनों तरफ होते हैं, तो हम यहाँ बंद करके वो फरिश्ते नहीं बनते, हम इंसान ही रहते हैं। फिट ऑफ रेज में उन्होंने कर दिया ये, तो कोई इसका सोल्यूशन ही नहीं। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल होनी चाहिए राइट ऑफ अपील, बिल्कुल होनी चाहिए, इट्स ओनली द मेथड, बिल्कुल होनी चाहिए मेथड। आप मेथड विल नॉट, आप हमें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चले। इट्स लाइक अ पेशेंट डाइंग ऑन द, इट्स लाइक अ पेशेंट डाइंग ऑन, सुन लीजिए, पेशेंट डाइंग समवेयर, अ पर्सन रिसीव्ड अ गन शॉट वुंड, इज लाइंग समवेयर ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। Now, someone is not a doctor, but knows a little bit of medicine. He does something, tries to press him thing. Ideally, it should be performed by the doctor. So he said, no, don't do it. Wait for the water to come. Wait for him to die. And he, of course, he's not a doctor. He may be a quack, or he may just have seen some television shows, and he may just be applying some first aid, medical trade, who's not a doctor at all, not even a nurse, to save the person. So, इसमें ये बात हमें बिल्कुल इसको कर दें। इसका आप फिर शुरू में तो आप लोगों ने अटैक कर दिया था इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट पे, तो मैं तो कह रहा हूँ इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट इज गुड। तो मैंने इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट को नहीं किया, इस साइड से लोगों ने किया है, उन्होंने कहा कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, हमें बता दें पर्सन स्पेसिफिक कैसे है। नॉट बी डिबेटेड हियर, आई नेवर सेड दैट, आई सेड कि दिस लॉ मे बी वन ऑफ द गुड लॉज, but the point is that the way it has been done is unconstitutional. That is my case before your lordship, my humble submission. और देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी, question is where the Constitution has put up a scheme of separation of powers as to who can do what. There is a reason, there is a rationale, and there is a philosophy behind it which has been developed over centuries of jurisprudence. If we open the door, and this is a question of opening the door, we open the door for the Parliament to interfere in every matter that the Supreme Court may or may not take up, then there is no end to it. There would be good legislation and there would be bad legislation. How do you differentiate? The differentiation is put in the Constitution by the framers. This is what you can do and this is what you cannot do. yes, Whether you want to do something good, if the Constitution prohibits you to do it, and the Constitution does not totally prohibit you. It says if there is something which should be in the Constitution is not immune from being amended to do that good. yes. But to confer this power on the Parliament and say whatever you do, even if it is beyond the Constitution, if it is good, it's good. That is not how constitutions work. Yes. जी, इसमें एक सेकंड है, ये ना, ये जो रैशनल जो है, हमारे रैशनल और रीजन और फिलॉसफी जो होती है, we tend to forget when there's trampling of boots. Then all these things, nice philosophies go out the window. The only difference between a constitutional amendment and a law, the only difference is a numbers game. Do you have 2/3 majority? It's the very same persons doing the lawmaking, the same parliamentarians who are making law. It's no difference. It's just a question of numbers. Suppose a political party comes to power on the pledge, they're going to provide 184(3). They win the election. They don't have the numbers for 2/3 majority, so they are helpless. Even though it was a pledge to the nation, we'll go. The first thing we're going to do is do this. So at the end of the day, it's a numbers game. But if it's a numbers game, then we should also realize the traumatic history of Pakistan. Irrespective of numbers, irrespective of the entire nation, one person comes and then parliament is held at whatever it is held at,
and 269, 270, 270 AA, and everything is done is all right. It's a post-rubber stamp, done illegally, endorsed by Parliament by amendment to the Constitution. That's all right. We forgo the history. भाई अमेरिका में ये चीज़ें नहीं होती. When we are so particular about the full stops and the commas, then we should also say it has not yet happened in America. It may happen tomorrow. It has not yet happened in the UK other than Cromwell. So we should not forget. We should keep in mind the history of the nation also, which is a very fragile history. It's half a country today because of these acts. So let's not cripple the parliament completely when they are doing good because they don't have the numbers, 2/3 majority. That's all the argument is left with. 2/3 से कर लें, ठीक है. आपका एक वोट कम है, आप नहीं कर सकते हो. That's what it boils down to that. Sir, my lord, to defend, protect and preserve the constitution. If the For the people of Pakistan. if that is the thing, then फिर हम आपसे वही सवाल पूछेंगे कितने लोगों ने किया है इसको. then constitution gives a mechanism, a procedure. You can, my lord, with utmost respect, it is not a numbers game. It is a constitution put, the framers said that if a constitutional amendment has to be made for the people of Pakistan, because they are representing where the independent judiciary will be fully secured, then you have that number games. नहीं, it is the constitutional requirement, आप sir. तो हैं सिर्फ आपसे you were not agitated enough either to vote in to have filed your own petition. No, you have filed your own petition. No, or sir. you're on notice. Notice, sir. ठीक है, so you were not agitated enough to have filed your own petition. ठीक है, some people came and filed their own petition. So if you were so agitated, you should have done it the very first day yourself. The Supreme Court, it would have been very nice to see Supreme Court Bar Association. जो cases file के वो तो take up नहीं हो रहे जो Supreme Court bar वो क्यों नहीं हो रहे take up? क्योंकि आप ये केस को खत्म ही नहीं करना चाहते. बात नहीं है सर. खत्म करें. बात जी election petition pending The Constitution says, the Constitution says we the people of ये excuse me जरा हमें भी question करने का time दिया जाए. give ourselves the following Constitution. जी. Now the people of Pakistan have said if we want to amend the Constitution, जी. we would do it through our चलिए ठीक है, ये argument हो गया, आगे बढ़ते हैं. चलिए ठीक है, समझ गए 3/4 का argument. चलें आगे बढ़ें. Mr. Zubairi, क्या मैं सवाल कर सकती हूँ? Excuse me. जी पूछिए जस्ट. My lord. जी, the act says that subject to constitution and law, they have amended, they either taken the power of the Supreme Court by making rules. So what article of the constitution they have referred to? They have referred to. They have referred. Amendment has been made. जी. We are opening the doors. जी बिल्कुल सही. In future for amending the constitution. My humble submission is Article Simple majority. 175(2) has been read in isolation to amend this law. Basically, an amendment has been done in the Constitution by amended by 175(2). And my humble submission is 175(2) cannot be read in isolation. It has to be read with Article 142A and Anti-55. अगला point बताइए. एक point is with Mr. Zubairi, if I may, Mr. Zubairi, my lord. Mr. Zubairi, may I ask you and follow up on what my learned colleague has said, that when Constitution is being amended, it is constituent power that is Yes. being exercised. My lord. It is a unique power, quite separate and different from the Legislative. other legislative competence that is available to Parliament. So I think what my learned colleague is saying is, if we open this door जी. of an indirect amendment to the Constitution, we are allowing Floodgate. constituent power. It is not a numbers game, जी. if I may Yes. say so with all due respect. जी. It is a numbers game because it is constituent power. We are allowing constituent power to flow into a channel which the Constitution prohibits जी. directly or indirectly. जी. So therefore I think the point that my learned colleague has made, that this is at most or at worst perhaps an indirect amendment of the Constitution, which is perhaps barred by the Constitution itself. Sir, tomorrow if this law नहीं tomorrow नहीं, अभी हम यही देखते हैं. if this नहीं, law is अब ये बिल्कुल for हम नहीं example, करेंगे. then the Parliament can also decide that the junior most judges will जी. Zubairi You cannot, we have a particular case, argue that. What happens tomorrow, I am not one who gives judgments on the basis of surmises. इस पे कर लें आप, बहस खत्म कर लिया, आप वही पॉइंट्स बार बार दोहरा रहे हैं. Zubairi साहब, जरा जल्दी खत्म कर लेना, आपका वक्त निकल जाएगा You दूसरों are का. representing the Supreme Court Bar Association. You're not a petitioner nor respondent.
क्या आप ये बेहतर नहीं था कि आप आके कहते हैं कि जनाब इस एक्ट को पेश करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मेरे ख्याल में जरूरत इसलिए महसूस हुई कि हमने 184(3) के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर इस्तेमाल किए, क्योंकि अगर आप इसकी वर्डिंग पढ़ें उसमें सिंपल बात यह है, फिर से अगर आप पढ़ लें, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199, द सुप्रीम कोर्ट शैल, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any fundamental right conferred by chapter 1 of part 2 is involved. हमने जो ऑर्डर्स किए, हम तो लोगों को सजा भी देते हैं, हम लोगों को बरी भी करते हैं, चीनी की कीमत भी मालूम करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। क्या ये अगर हम अपने इस डोमेन में रहें तो किसी लॉ या रूल की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल में नहीं। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ कि जी ये आप पावर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलतियां की होंगी, लेकिन पार्लियामेंट उसे सही नहीं कर सकती इस लॉ के थ्रू। दैट इज माय केस। अगर आप करेंगे तो आप खुद करेंगे सर, ये अपने रूल्स में अमेंड करके सर। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर पावर नहीं, आप अपने रेगुलेट करेंगे अपने रूल्स और प्रोसीजर को। गलती अगर आप कहें तो आप उसको करेक्ट करें, आप उसमें रूल्स अपने रूल्स अमेंड करें, उसमें आप अच्छा चलिए आप ज़ुबैरी यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। अगर हम किसी और को मौका देते हैं, यू जस्ट रिपीट। नहीं, डू यू वांट टू कैन इफ यू रिपीटिंग योरसेल्फ विल आस्क हियर समवन एल्स। 184(3) is original jurisdiction conferred by the constitution. जी, And it is the original jurisdiction, and if appeal is given, that would continuation of the proceeding before the original court. जी, This is settled. you will have a super It is settled Supreme law. Court. जी, Any provision of the constitution where appeal is given by a simple legislative power by the parliament, that is permissible under the law. no, my lord, under the constitution it is not, sir. That's my, and may I just quickly take your lordship? Zubairi Saab, how would you explain enlargement of jurisdiction? Yes, I'm coming to that. And per conferring supplemental Yes, my lord. powers. जी, जी, Because you see, to be interpreted liberally जी, as already laid down by this court. नंबर केसेस सर। माय लॉर्ड हम्बल से एक बस एक आप करके फिर खत्म करूंगा। डायरेक्टली उस पे आ जाए ना जी। if the सर parliament मैं is कह रहा हूँ कि जी competent पार्लियामेंट enlarge the सर कोई jurisdiction जी enlarge and also to confer any supplemental यस power. माय हम्बल सबमिशन अपील जो पार्लियामेंट ने दे दी इसके अंदर, तो कल किसी चीज को भी अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट को दे सकते नहीं, हैं। आप देखें ना, पहले इसको तो जरा रूल kindly explain 50 कर दीजिएगा। अगर तो jurisdiction expand कर सकती है पार्लियामेंट, तो फिर उनका इख्तियार है। नहीं सर, with utmost respect sir, How do you read जी, this? I'm reading, I'll take help from a judgment of this court, 2000 SCMR, page 567, and the relevant portion is at page 617, sir. And let's read this paragraph to answer your lordships and my lords. 2000 SCMR, page 567, Province of Punjab is the National Industrial Cooperative Credit Corporation. इसमें through a provincial law, appeal was provided to the Supreme Court. That was struck down. Though a judge or cooperative judge was a judge of the Honorable Supreme Court, that was said that is fine. But when the appeal was granted, it was struck down. And this is what the Honorable Supreme Court had. My Lord, kindly see page 617, para 17. A6. 617, my Lord. Starts at 567 and page 617. And the appeal के बाद may I just read? The lordship page. Coming now to the present constitution of 1973. It may be of the para 17, sir. It may be observed that according to the Learned Council for the Government of Punjab, in view of Article 175(2) of the Constitution, under which jurisdiction can be conferred on any court, including the Supreme Court, by or under any law, in relation to matters in respect of which provincial legislatures have power to make laws, including cooperative societies, additional supplemental jurisdiction or powers can be conferred on the Supreme Court by provincial legislatures. The law mentioned in Article 170 includes a provincial law and additional supplemental jurisdiction on powers and form an appeal to the Supreme Court under Section 22 of the impunity laws being conferred on the Supreme Court in respect of a matter which the provincial have exclusive jurisdiction under the Constitution to enact laws. Now, since judgment is quoted and the finding of the court at the bottom of the page. In view, there is no ambiguity interpreting entry 55 of Part 1 of Federal Legislative List 4 Schedule of 73 Constitution. Entry read with Articles 175(2) and 142A
of the confers exclusive powers on the Parliament to make laws for enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court or conferring on its supplementary powers. If Entry 50 was not there in the federal legislatures, it could be argued that under Article 175(2) of the Constitution, in respect of matters relating to corporate societies exclusively falling under the comprehension of provision, a law can validly be made by a provincial enlarging jurisdiction of Supreme Court and conferring on its supplementary power. But Article 175 is not to be interpreted in isolation. It has to be read and interpreted along with Article 142A and entries in the legislative list. Under Entry 55 of the Federal Legislature is competent to make laws regarding jurisdiction. Actually, you're not reading the relevant part. The relevant part are two lines. Ji. The last is 616. Pe last line pad lijiye. The two lines following that. That's what is the answer to the question. 616 की last line पढ़िए page पे. Ji, from the aforesaid. हाँ. From the aforesaid entry, it follows that under the interim constitution, additional supplementary jurisdiction could only be conferred upon by a law made by. Yes, sir, interim constitution की आप बात पढ़ कर तो रहे थे. लेना provision तो वही है ना. जी. By a law by the federal legislature. नहीं सर, वहाँ issue सिर्फ इतनी सी सर, थी. जरा समझने की कोशिश करें ना. सर, मैं 73 आप जरा सुन तो लीजिए जी. ना हजूर कि वहाँ सिर्फ ये बात उन्होंने कही जी सूबाई उसको पावर नहीं है और स्पेसिफिकली ये जुमला इस्तेमाल कर दिया फेडरल लेजिस्लेचर कर दे तो वो प्रोविंशियल बात तो हम भी मानते हैं मतलब मैं कम से कम मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे उसकी एंटी 55 में एनलार्जमेंट की बात नहीं की हुई थी 72 की आबिद जुबैरी साहब जी इसको पढ़ लूं सर प्लीज सर आबिद एक मिनट मैं आपसे इसके 4 लाइनें पढ़ लीजिए उससे पूरा जवाब आ गया 618 पेज पे आइए आ रहा हूं उसी फर्स्ट पैराग्राफ जी लास्ट 4 लाइंस हाउएवर से पढ़ दीजिए आप सर मैं इसके ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ दीजिए वो इसका आ रहा हूं जो माय लॉर्ड्स क्वेश्चन वाज अच्छा फिर आप फिर छोड़ दीजिए फिर हम अगर आप समझते हैं आप शाम तक चलाएंगे इस केस को सुबह से आपको दे रहे हैं टाइम दो लाइनें तो हाउएवर से पढ़ दीजिए ना दैट लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ेंगे हां दैट इज द क्रक्स हाउएवर से पढ़ दीजिए However, jurisdiction of Supreme Court can be enlarged, supplementary powers can be conferred on Supreme Court by law in view of Article 175(2) of the Constitution, Entry 55, read with Article 142, leave no that the enlargement jurisdiction conferred supplementary powers can only be done through law made by federal. लेकिन ये है सर लेकिन इसका ऊपर वाला रेशियो ऑफ द जजमेंट ये रेशियो है बस तो रेशियो ऊपर भी है सर अच्छा अब आप हम आपको खत्म कर रहे हैं सर एक मिनट सर एक मिनट आपने पढ़ा है दिस इज द मेयर रीस्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज रिटन हम पढ़ लेंगे ना यार देखिए ये हमारा काम लाइन है नहीं आप हमने बता दिया हमने नोट कर लिया जो असल उसका क्रंच वो अच्छा अगर आप सॉरी टू से अब हमें एक ही इंप्रेशन मेरे जहन में क्रिएट हो रहा है कि आप चाहते हैं कि 184(3) के केसेस जो लगे हुए लगे नहीं कोर्ट में क्योंकि आप चाहते हैं कि खत्म ही ना हो कभी तो बस आप खत्म कर दीजिए ना आपने बता दिया हम पढ़ लेंगे शुक्रिया मैं कह रहा हूं आइसोलेशन में नहीं पढ़ा अच्छा अब आप कोई और पॉइंट है तो हम सुन के आपको दोबारा नहीं सुन रहे हैं दूसरा पॉइंट जो है कि जी इसके अंदर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया 18 सेक्शन 5 के अंदर कि जितने केसेस हैं वो सब खुल सकते हैं पहले जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा जी ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ये सिर्फ 184(3) के लिए है जी अगर किसी ने 188 के तहत रिव्यू एक्सरसाइज कर ली है उसके लिए नहीं है देयर इज नो अपील अगेंस्ट रिव्यू सो देयर वुड बी हार्डली एनी केस लेफ्ट फॉर दिस अपील टू बी एक्सरसाइज ठीक है सर आप सही कह रहे हैं लेकिन पॉइंट इज दैट giving of power who can give that power appeal आप बता देना उसका इफेक्ट क्या है इसका इफेक्ट ये है कि hardly any effect सर मुझे नहीं मालूम because it is not a power against a review I am not there to say कि कितने केसों में रिव्यू हुआ है नहीं बास केसों में नहीं हुआ होगा रिव्यू उसके ऊपर तो राइट खुल जाएगा फ्रॉम 1973 तो आपको घबराहट क्यों है हमारे काम बढ़ जाएगा ना घबराहट की बात नहीं है मैं समझना चाह रहा हूँ सिर्फ ये केस घबराहट से आर्गुमेंट नहीं है आप कॉन्स्टिट्यूशन या तो प्रिवेल या नहीं करेगा अब वी हैव नो टू वेज आइदर द कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक है बार-बार ये बात रिट्रेट ना करें ना समझ गए एकदम घबराहट तो नहीं हो रही सर घबराहट तो नहीं हो पॉइंट इज दैट कि आइदर कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है या नहीं देता ये कॉम्पिटेंस है या सुन ली बात है ना बार-बार कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना खत्म अब हम अगले जो होंगे सुनेंगे उनको अगर उनको आपको 20 मिनट सुनेंगे ठीक है थैंक यू सर